Hello people, welcome to Shifting Gears, and right now I am driving the Mahindra XUV700 और ये है इस गाड़ी का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट। हमने इस गाड़ी के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इवन आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस कार। सो डू सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गेयर्स चैनल so that you get to know everything about this new XUV700 here in the Indian market. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अबाउट द ड्राइविंग फील विद दिस पेट्रोल ऑटोमेटिक, हाउ कन्वीनियंट इज दिस ऑटोमेटिक, एंड इज दिस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन एक्साइटिंग इनफ और नॉट। सबसे पहले लेट मी कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। लेट्स टॉक अबाउट रिफाइनमेंट। सो स्लॉटिंग इट इन पार्क मोड। ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं पे भी कोई भी पल्सेशन फील नहीं होने वाला है। द इंजन फील्स नाइस एंड रिफाइंड, देयर इज नो वाइब्रेशन एट ऑल। व्हेन यू किक दैट थ्रॉटल पेडल, इतनी इंजन नॉइज जो है आपको कैबिन में सुनाई देगी, बट दिस साउंड्स गुड फॉर अ पेट्रोल इंजन। लिसन टू इट अगेन। नॉट बैड, इजंट इट? इस गाड़ी के साथ आपको एक 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है, एंड दिस कार इज ओनली गोइंग टू गेट वन पेट्रोल इंजन ऑप्शन इन वन स्टेट ऑफ ट्यून। आपको अलग अलग इंजन ट्यून मैप्स नहीं मिलने वाले हैं विद दिस कार। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। इस पेट्रोल पावर्ड XUV700 के साथ आपको एक 2 लीटर TGDI 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगी। It will pump out 200 PS of power at 5000 RPM and 380 Newton meters of torque between 1750 to 3000 RPM। इस गाड़ी के साथ आप या तो एक 6 स्पीड मैनुअल या एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन खरीद सकते हो। इस XUV700 पेट्रोल वेरिएंट के साथ आपको कोई भी इंजन मोड्स नहीं मिलने वाले हैं। इन द डीजल वेरिएंट्स यू डू गेट engine modes, and you get a total of 4 modes actually, with a button placed over here below the climate control settings. But here it is a blank piece, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे चेंजेस करने का मौका नहीं मिलने वाला है। Everything is standard default and that's about it. Now if you are planning to buy this petrol automatic variant, you of course want to know about how convenient it is to drive, how easy it is to drive. So check it out. One finger twisting the wheel and I can very easily make these U-turns, and it just felt very effortless. स्टीयरिंग व्हील लाइट है और इसके वजह से इस गाड़ी को शहरों में चलाना काफ़ी आसान होने वाला है। सो चेक इट आउट वन मोर टाइम। वेरी इजी वन हैंडेड ऑपरेशन। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी ये XUV700 जो है अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर पाओगे, एंड इट इज गोइंग टू फील वेरी कार लाइक टू ड्राइव। Another aspect why it feels very car-like to drive is that this XUV700 comes with a monocoque construction. This is not a body on ladder frame. This is a unibody actually. So because of that, it drives much better than traditional SUVs. It drives much tighter around corners as well. And because of that, you do feel like it is just so much more exciting when you compare it by SUV standards. अभी इस गाड़ी के साथ जो आपको गियर बॉक्स दिया गया है, दिस 6 स्पीड ऑटोमेटिक, यू गेट टिप्ट्रॉनिक फंक्शनैलिटी, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी पैडल शिफ्टर्स। तो टिप्ट्रॉनिक फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए यू हैव टू पुश दिस गियर सिलेक्टर टू दी लेफ्ट हैंड साइड एंड देन पुश इट अपवर्ड्स टू अप शिफ्ट, डाउनवर्ड्स टू डाउन शिफ्ट। There are no paddle shifts, so you can't take manual control over the engine and gearbox from the steering wheel. But nevertheless, टिप्ट्रॉनिक फंक्शन होने के कारण अगर आपको ऐसा लगता है that you know the ideal rev range much better than the car's onboard computer, you can do that. You can play around with the revs and stay in a more higher rev range so that you can get better acceleration as well. Right now I'm going to come to a complete standstill and I'm going to slot it in standard D mode. And let's check out how this car accelerates, how this petrol automatic accelerates. So I'm going to turn off the auto hold functionality so that we get a better launch. So in 3, 2, 1, listen to the engine.
इस गाड़ी में आपको कोई ड्राइव मोड्स तो नहीं दिए गए हैं, बट यू ऑल्सो डोंट गेट एन एडिशनल स्पोर्ट मोड फॉर द गियर बॉक्स. यू ईदर गेट द स्टैंडर्ड डी मोड or you get manual Tiptronic mode. So right now I'm going to shift it to manual Tiptronic mode, and now I'm going to take manual controls over this gearbox. So in 3, 2, 1, listen to the engine now. Once you give that upshift command, it does take a split second to respond. बट ओवरऑल द गियरबॉक्स स्मूथनेस इज क्वाइट एक्सेप्टेबल और आपको इस डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्लेन नहीं होने वाली है. व्हेन आई वांट टू चेक इफ इट इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू द गियर फॉर अ लॉन्गर टाइम, आई हैव स्लॉटेड इट इन थर्ड गियर नाउ, एंड इट इज होल्डिंग ऑन टू द थर्ड गियर and not upshifting very early. So that is also a nice touch that the gearbox will allow you to play around on your demand, on your command. It is still in third gear, but if the speeds drop like now, the engine has automatically shifted to the second gear so that you still get good progressive momentum gain. Engine knocking आपको फील नहीं होगी. Of course this is an automatic and all the electronics will work in harmony to ensure that you get a good drive और आपको गाड़ी चलाते समय ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, because that is the primary reason why you bought an automatic. Right now I am continuing to drive this car in Tiptronic mode. I am in second gear and as you can notice there is a bridge that I am climbing. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको इंजन को लोअर गियर में चलाना है, if you have heavy load of passengers or luggage in the car, it is still holding on to the second gear so that as soon as I tap the throttle pedal, I get good acceleration and I don't lose momentum or I am not a slow car out on the highway. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप टिप्ट्रॉनिक मोड में इस गाड़ी को चलाने वाले हो and you forget to upshift, that it will stay holding on to that gear for a really long time and just keep revving the nuts out of the engine. It will upshift if it senses that you still are demanding for a lot more power depending on your throttle input, and then it will make that upshift. So check it out. Slotting it in second again, kicking down the throttle pedal, and the engine does upshift close to 5000 rpm, very close to 5000 rpm by itself if you keep that throttle pedal pinned. लेकिन जब आप इस गाड़ी को आराम से चलाने वाले हो, let's consider that. So coming to a complete standstill, let's imagine you are waiting at a signal and then you lift off the brake pedal. The car gets this creep functionality, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको गाड़ी चलाते समय इसकी काफ़ी मदद होगी. It is crawling close to 8 km/h, so you don't necessarily have to give throttle input. And when I start picking up momentum, when I just feather the throttle pedal, the engine is upshifting under 2000 rpm, close to 1900 or 1950 rpm. So there is phenomenal amount of torque from this petrol engine as well. For a petrol motor, 380 Nm is a respectable number, and thanks to all that torque that is available, this engine doesn't need to rev higher to stay in an ideal rev range to give you more progressive momentum gain. और जब भी आप इस गाड़ी को आराम से चलाने वाले हो, when you are going to use it in your day-to-day life in city traffic or out on those occasional highway trips, इस गाड़ी का ये जो 6-speed automatic gearbox है, it is nice and smooth, it is not too jerky, so आपको ज़्यादा head nod फील नहीं होता है, ज़्यादा jerks आपको फील नहीं होंगे, जिसके वजह से ये engine और gearbox combination आपको ज़्यादा खुश रखेगा, and because of that you will have a nice stress-free drive in this XUV700 Petrol AT. The variant that I am driving right now is a two-wheel drive, but Mahindra is also offering you the XUV700 with an automatic and with an all-wheel drive. So do check out the all-wheel drive video which we have uploaded about this car so you get to know how it performs.
Now if you are too bored to check out the diesel drive video जो हमने अलग से अपलोड किया है, let me very quickly wrap up things about this car in this video as well. So the steering wheel is super light. सिटी में आप इसे काफ़ी आसानी से चला पाओगे. हाईवे पे it weighs up respectably and it will give you good amount of confidence. For a big SUV, there is surprisingly no kickback on the steering wheel. अगर आप हाई स्पीड्स में कॉर्नर एनकाउंटर करते हो, इवन एट 100 km/h आपको स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी जडरिंग महसूस नहीं होने वाली है. So that is definitely going to allow you to drive more confidently and dart out of corners much sharper. इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है, very compliant, very well tuned. It gives you a nice and flat ride quality out on the highway. Around twisty roads, body roll जो है वो well controlled है thanks to all the electronic safety features that you get with this car. And the suspension setup even on bad roads is very nice and compliant. आपको ज़्यादा झटके जो हैं वो कैबिन के अंदर फील नहीं होने वाले हैं. So you will be a happy driver and you will be a happy passenger in this XUV700. 18 इंच के व्हील्स का ये गाड़ी इस्तेमाल करती है on the top trims which we are driving today, but the ride quality was good enough and I did not find that it was stiff at all. I was at peace. I was completely happy and comfortable throughout my review driving experience, which by now is 8 to 9 hours since morning. The braking feel and feedback is also acceptable. The brake bite is nice and progressive, ज़्यादा sharp नहीं है. और जब भी आप suddenly brakes slam करते हो, say for example in an emergency, this XUV700 also maintains a nice straight line. So you can stop safely and you can avoid any hurdle in your way. महिंद्रा के इस XUV700 के साथ आपको 200 PS की पावर मिल रही है, but keep this in mind that this is not a corner carver. This is a tall SUV, so there is some amount of body roll. So you have to keep that in mind and drive this car accordingly. लेकिन फिर भी for a tall SUV, this monocoque construction of the XUV700 keeps it well balanced, and at times when you feel the need for speed, you will be able to have fun. And as per SUV car standards, you might actually be overtaking a few other cars from segments which are supposed to have lower center of gravity, and you will still be happy. So that's about it, guys. That's my quick review of this petrol automatic with this XUV700. We will try to get this car for a longer period of time once it is back in our city. Today we are driving it and sampling it in Chennai. We are at Mahindra's proving grounds. We are at MSPT, which is Mahindra's new Mahindra SUV proving track. And this is just phenomenal what they have achieved at this particular facility and with this car as well, because compared to the XUV500, ये XUV700 जो है, it is much improved. It looks evolutionary in terms of the design DNA, but on the inside it is all new, and the engine and gearbox combinations are competent enough, and that price tag is just fantastic. See you soon, guys. See you in another video. Always drive safe, always wear your seat belts. This is going to save your life someday. If you don't wear it, you are the stupid one. Have fun, and whenever you are encountering corners, try to have both your hands on the steering wheel so that you get more confidence to drive out of these corners.